Good afternoon, everyone. Welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma, and we're going to continue with our series today on micro presentation for the Christ University examination. Can you hear and see me clearly, everybody? Am I clearly visible and audible? Hi, everyone. Good afternoon. We've had 2 classes already on micro presentation, yesterday and day before, and this is the third part in the series where we'll be discussing more things that you need to remember while you sit for the micro presentation. Also, we'll be discussing about the common topics that you can see as the ones given to you in the micro presentation. Hi Nisha, hi Vishal, good afternoon. I hope I'm clearly visible and audible. Yes, I am. All right. So before we start off with the session, the part 3 of the series, let me take you through a few things very, very quickly. So if you're targeting the CUCET for 22 target here, a batch 2 for this examination has been launched. And I'm sure this is the course that will make sure that you get through this examination. Isliye, don't be late, enroll yourself right away at the earliest. Also, we have a free mega workshop happening today at 2 p.m. precisely, where Ruhitip ma'am is going to come live on our app, where she'll be talking to you about how to deal with IPAT along with your boards. So if you're struggling with IPAT or any other BB entrance examination for that matter of fact with boards, I'm sure this is the workshop you need to watch. Bookmark kar lo, app mein hai, miss nahi karna hai. If you're targeting NPAT, SET, GGS, IBU, CET, Christ University, St. Xavier's, these BB entrance examinations, then batch 2 targeting for these BB entrance examinations has been launched. This is the best study plan to crack these exams, so make sure you enroll yourself at the earliest and don't wait for that. If you're targeting IPMAT and DUJAT, then a specific batch addressing these 2 BB entrance examinations has been launched on 18th of Feb. If you are preparing for these BB entrance examinations, make sure you call our counselors on this number to know more about this program and enrolling yourself right away. We have a lot of free series that happen every day on our BBA channel. That is the YouTube channel for BYJU'S Exam Prep. So every day at 2 p.m. we have GK free series by Salik sir. Every day at 4 p.m. we have logical reasoning free series by Rohit ma'am. Every day at 12:30 p.m. we have verbal ability and critical reasoning free series by me, Alpa Sharma. And every day at 11 a.m. we have quantitative ability free series by Ankur sir. I'm sure you would not want to miss out on these free classes. Jaldi se subscribe icon pe click kar do, subscribe to the channel and share our videos as much as possible if you like them. I'm sure you know the faculties that we have here on this platform. They are the best in the industry. We've got Ruindip ma'am, Rabia ma'am, Salik sir, Vinod sir and Ankur sir. इनसे पढ़ना है तो जल्दी से enroll कर लो. Hi everyone, good afternoon. All right, so I've got so many people here. जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं. I'm sure आपने yesterday and day before yesterday का सेशन देखा होगा माइक्रो प्रेजेंटेशन पे. If you haven't seen that, make sure you watch that because examination में भी बहुत टाइम नहीं बचा है. So let's continue with our session on micro presentation. And we already know that the examination CUET that targets the Christ University is on its way. We don't have a lot of time left for this. In the previous classes, I had told you about the sections that come up in CUET examination, which makes this examination a little different from the other examinations because of a specific topic that is asked here along with the others. So you've got precisely 6 sections for 120 marks and you're given 2 hours to solve this paper. But what makes this examination different is fundamental accounting that comes in CUET that usually isn't a part of the other BB entrance examinations. Plus, data analysis and interpretation is also an important section construing of 20 marks, which also is an important one, which is usually not seen in many BB entrance examinations along with GK. So this whole combination makes CUET actually a little different from the other examination, and adding on to it, we've got the micro presentation and interview that would happen after you have done with the CUET entrance test. So we will be talking about micro presentation in more detail like we spoke about yesterday and day before. So हमने discuss क्या किया था 2 days back? We discussed that in micro presentation you will be given a topic and within a few minutes you will be asked to speak on that topic impromptu. So it will be like an extempore that you और इस extempore में आपको prepare करना है कुछ minutes के लिए और hand to hand बोलना है उस topic पे.
ये आइडिया होता है माइक्रो प्रेजेंटेशन का, ये आपको करना होता है। और इसमें हमने कल की क्लास में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे जिन पे जो हमने पार्ट 2 किया था, जिन पे माइक्रो प्रेजेंटेशन की टॉपिक्स बन सकते हैं। So we spoke in detail about the Pegasus controversy, the job versus entrepreneurship, the rise of the OTT platform after the pandemic has hit us, the media, that is the fourth pillar of the democracy, its positive and the negative aspects of it as well. The electric vehicle, the future of transport mobility, yes and no. We discussed both the perspectives. Taliban taking over Afghanistan, why, the history of it, and what are NFTs and why did it come into the news. These were the topics we had discussed yesterday. If you hadn't watched my yesterday's video, please go back after the class and watch the discussion that we've had on all of these topics. So I've got many more topics today that I'm going to be talking to you about, but I wouldn't be discussing each one of it in detail. So I'll tell you a little about each one of that, but I'll expect you to do a lot of research. So today's class, Preeti, that's available in our app. So you can download the app and under the test exam papers, you would find these papers. Okay, that's available in our app. Alright, so the new topics that I've got today, I would expect you to do a little bit of research on them. Research करो, थोड़ी पढ़ाई करो उनके बारे में, because हमारे according वो topics है जिन पे easily questions आ सकते हैं, easily macro presentation topics बन सकते हैं. Let's shoot. So the first topic that we have today is government should invest in alternate energy sources. Alternate energy sources क्या होते हैं? Alternate energy sources होते हैं renewable sources of energy. और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हमारे कंट्री ने जब गैस जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, गिव मी अ सेकंड, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, एक सेकंड दीजिए बेटा, समथिंग, ठीक है। सो एंड ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज गैस ग्लव में जो मीट हुई थी COP 26 की, वहां हमारे कंट्री ने 2 टारगेट दिए थे। 2070 का टारगेट जो हम अपने आप से डिसाइड कर रहे थे, जहां 2070 तक हमारे कंट्री का, इंडिया का नेट जीरो एमिशन अचीव हो जाएगा। ठीक है, सो नेट जीरो एमिशन का टारगेट हमारा 2070 था और 2050 का हमने टारगेट लिया था, जहां 2050 तक हमारी एनर्जी रिसोर्सेस पे जो डिपेंडेंसी है वो 50% हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे आ जाएंगे। सो 50% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन जो हमारी कंट्री में होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे हो जाएगी बाय 2050। ये टारगेट जब हमारी कंट्री ने गैस लॉ में दिया, सो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज और भी इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, गॉट दैट एवरीबॉडी? इसीलिए ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज जैसे रिन्यूएबल कौन सी होती है? सोलर पावर, जिसपे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी विंड पावर पे भी है जिसपे सुजलॉन काम करता है, आप जानते हैं, यस। तो और भी बहुत सारे हैं जिनपे हमारी डिपेंडेंसी है, हाइड्रो पावर फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से हमारी ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंडेंसी बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और हमको नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव करना है। प्लस गवर्नमेंट को इसलिए इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्यों गवर्नमेंट किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकती है, किस तरीके से ट्रांजिशन कर सकती है ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज पे, दैट्स गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वन। सो दैट्स द फर्स्ट टॉपिक you need to work on. The second one is right to privacy. Again, as I had discussed yesterday, jab Pegasus issue it came to the fore, we knew that Pegasus was a software that was invading into our right of privacy. Why do I tell you where I live? Why do I tell you where I go? Why do I tell you who I speak to? If the government wants to know that, it's a violation of my right to privacy. So with the emergence of the Pegasus issue, we knew right to privacy came to the fore. So we need to know what exactly is right to privacy and how can governments or individuals violate the right to privacy and how can somebody ensure that. So reading about right to privacy, plus I'll add one more point. Right to freedom of speech. I think both the topics become really important. So freedom of speech and right to privacy.
Both are going to be an important one. ठीक है? The next one, importance of regional languages. रीजनल लैंग्वेजेस, देखो अभी कुछ टाइम से न्यूज में हमारी मातृभाषा आ रही थी. डू यू रिमेम्बर लुकिंग एट दोज आर्टिकल्स कि हमारी रीजनल लैंग्वेजेस बर्डन हो रही है बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश एंड मे बी English precisely, yes. The dependency on regional languages is reducing, and why is it important for us to actually continue our focus on regional languages? Yes, you remember reading that in the newspapers? Yes, that came to the fore a lot of times. So, the importance of regional languages, plus जब regional languages आ सकती हैं तो Facebook का भी इशू इमर्ज हो सकता है, where Facebook could not monitor articles written on regional languages because their AI wasn't efficient enough. And these articles, these posts made in Facebook on regional languages were actually giving birth to communal violence. So, is it really important to work on regional languages? Should we focus on English only? If it is important to focus on regional languages, give pointers. Why is it important to focus on them? And English as well is important. So you need to make a balance between them. National, international language and regional ones. Both important. Why are they important? What is the necessity to work over protecting our regional language? We need to work on that. Next one, the scams in India. What comes to your mind when we name scams in India? क्या आपके दिमाग में आता है जब हम स्कैम्स की बात करते हैं? कौन सा स्कैम आता है आपके दिमाग में? लेट मी कौन सा स्कैम आता है दिमाग में? कोल इंडिया, कोल स्कैम, ठीक है. और कौन सा स्कैम आता है दिमाग में? विजय माल्या, ऑफ कोर्स, यस साई, यस विजय माल्या का स्कैम आता है, ठीक है. तो अच्छा साई, जब विजय माल्या का स्कैम आता है दिमाग में तो फिर द ज्वेलरी आइकन, ठीक है. यस, ऑल ऑफ दीज स्कैम. और कोल पे स्कैम अभी लेटली बहुत न्यूज में आया था. So coal ka scam also becomes an important one. So you need to be aware of all the scams that have happened in our country. और अभी lately लालू प्रसाद यादव को accuse किया गया था. एक लास्ट उनका जो स्कैम की हियरिंग बची हुई थी उस चीज में. So उनका fodder scam भी नीरव मोदी, of course, yes. So fodder scam, yes, that's exactly what I was talking about. The fodder scam by लालू यादव वो भी बहुत न्यूज में आया था lately. So we should remember that scam as well. ठीक है. सो स्कैम्स ऑफ इंडिया इन पे आ सकता है आपको बोलने के लिए. नेक्स्ट, प्रेशर टू परफॉर्म डिस्ट्रॉयज चाइल्डहुड. इस पे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक जेनेरिक टॉपिक है. आई एम श्योर आपके दिमाग में मेरे से बहुत ज्यादा चीजें होंगी कि इतना प्रेशर है एक बच्चे का परफॉर्म करने का कि वो उसका चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय कर सकता है. और आपको पता है मैं कितना सपोर्ट करती हूँ इस चीज को, बिकॉज यू नो आई डोंट सेंड माई चाइल्ड टू द स्कूल. माई चाइल्ड डज नॉट go to any school because it's the pressure to perform जो उसका चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय कर सकता है. और मैं नहीं चाहती उसका चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय हो. प्रेशर टू परफॉर्म होना ही नहीं चाहिए. बच्चा अगर किसी चीज को पसंद करता है तो वो अपने आप उसमें परफॉर्म करेगा. प्रेशर में वो कभी भी परफॉर्म नहीं. अगर आपकी लाइकिंग है बीबीए क्लैट, आप अपने आप परफॉर्म करोगे उसके अंदर. यस, सो दैट्स व्हाई you know more than I do about this topic. Environmental disasters are man-made. कितनी न्यूज, उत्तराखंड लैंडस्लाइड्स, कितना न्यूज में था ये. मॉनसून ओवर हो गया था, स्टिल देयर वर क्लाउड बर्स्ट्स, disastrous landslides that destroyed so many lives. What led to that? We making dams, we making tunnels under the mountains. So these disasters are actually man-made. We spoke about this in so many editorials. Remember that? Yes. So environmental disasters are not environments. These are humans that we do. The startup wave. कल भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी जब हमने शार्क
टैंक डिस्कस किया था. विद द एमर्जेंस ऑफ दिस, ऑल्सो विद द पैंडेमिक, क्योंकि इतने लोगों ने अपनी जॉब्स लूज करी थी, द स्टार्टअप वे लास्ट इनफैक्ट 3 4 5 years, अब देखिए 5 years से तो स्टार्टअप कल्चर का जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल स्टीप राइज पे है. ऑल्सो मेक इन इंडिया बहुत फेवर करता है इस स्टार्टअप वेव को, which has also accelerated this growth. So when you talk about the startup wave, you can also talk about the Make in India. Agreed, everyone? Agreed, yes? So that's the startup wave. COVID-19 and its long-lasting impact. देखो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो हमने देखा, बट कोविड का लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्या हो सकता है? आई वुड लाइक टू नो दिस फ्रॉम यू. व्हाट वुड बी अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट? So Lashika, today is my third class on micro presentation. Monday, I'm starting with a series on interviews. 3 classes on interviews and preparation. Make sure you have subscribed to the channel so you don't miss out on these sessions on interviews. 3 sessions will be talking about interviews, and after that, I'll be taking 3 sessions on WAT as well. Okay, so for now, let's stick to micro presentation. Monday, Tuesday, Wednesday, let's discuss interviews. Okay, so what are the long lasting impacts of COVID? Let me see if you can guess that. No answers yet. Okay, ठीक है प्रीति, good guess. Anything else? So let me give you a hint. मेरा बच्चा घर में confined हो गया. मेरा बच्चा पार्क्स नहीं जा सकता था, स्कूल्स नहीं जा सकता था, फ्रेंड से नहीं मिल सकता था, इस कोविड था. क्या इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा मेरे बच्चे के माइंड में? People lost their jobs. They were devastated. They destroyed their savings because of the pandemic. क्या इस पे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है उनकी मेंटल हेल्थ पे? Yes. People lost their savings to healthcare because the vaccination, not the vaccination, the medication, the hospital bills, the oxygen cylinders, they cost massive क्योंकि इतना dearth था, इतना crunch था इसका impact. And of course, लचिका, जब हम स्लो ग्रोथ की बात करते हैं तो हम स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात करते हैं. इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट था वो इतना ट्रिमेंडस था कि उसको रिकवर करने में आज भी हम प्री पैंडेमिक लेवल पे नहीं आ पाए हैं. आज ऑलमोस्ट 2 years होने वाले हैं मार्च 23rd को, पहले लॉकडाउन को, है ना, मार्च 26th को. अभी भी हम प्री पैंडेमिक लेवल ऑफ इकोनॉमी पे नहीं आ पाए हैं. So the impact on economy as well. So there, COVID-19 can have long-lasting impacts on economy, households, mental state of kids and adults alike. That's what you talk about in the micro presentation of COVID. Jobs ki, yes, children ki, exactly. Correct. So next one, should animal testing be banned? देखो, animals also have lives. जब आप ह्यूमंस की बॉडी पे टच नहीं कोई टेस्टिंग नहीं कर सकते तो आप एनिमल्स की कैसे टेस्टिंग कर सकते हो? आपको पता है PETA, PETA इसके बिल्कुल अगेंस्ट है. And PETA promotes those products that have not been tested on animals. Yes, these products could be the makeup products, vanity products. These products could be vaccination and medications. But because animals can't talk, is it fair to do testing on them? You can talk about that. Media and the power-hungry politicians. Media का politicians के साथ 2 तरीके से चलता है. एक चलती है फाइट और एक चलता है फेवर. मैं आपको बताती हूँ कैसे. जब आप न्यूज देखते हो रशिया और यूक्रेन की फाइट पे, तो क्या आपको कुछ कुछ न्यूज बायस्ड दिखती है? क्या रशिया के चैनल्स बाकी कंट्रीज ने और क्या यूक्रेन के चैनल्स रशिया ने और यूएसए के चैनल रशिया ने बैन किए हैं? क्यों किए हैं? The answer lies here. Media and the power hungry politicians.
Get that, everyone? Yes? Then comes the India's population and asset or liability. बहुत बहुत सालों से हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जब से हमारी पॉपुलेशन इतनी बूम में आई है कि लाइबिलिटी तो है ये पॉपुलेशन हमारे लिए, बिकॉज वी नीड टू फीड द पॉपुलेशन, वी नीड टू इंश्योर देयर इज नो पॉवर्टी। ज्यादा लोग होंगे तो जॉब्स कम हो जाती हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है बट लोग ज्यादा हैं। बट यही पॉपुलेशन मेरी असेट भी तो बन सकती है। यही पॉपुलेशन अगर हार्ड वर्क करे तो यही पॉपुलेशन मेरी कंट्री की इकोनॉमी को एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे ला सकती है। तो योर पॉपुलेशन, जैसे चाइना को देखो, चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को अपना असेट बनाया, वही वो पॉपुलेशन शायद हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन के रह गई है। So we can talk about it being both. Agreed? So our population can be an asset as well as a liability. I have spoken a little about each topic. I'll show you more topics, but make sure you do your research on them, because these are the topics I think that can easily be asked under the micro presentation topics. Here comes the next page. Page number 2. Artificial intelligence will help humanity. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेज का एक सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज्ड विद आवर सोशल मीडिया, कि वो कैसे कम्युनल राइट्स को रोक सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके थ्रू हम मेडिकेशंस बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों की मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। दस ह्यूमैनिटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लेकिन रिमेंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ड्रॉबैक्स भी हैं। So when you talk about this, you can mention its drawbacks as well. Yes, Preeti, exactly. So artificial intelligence can have both the impacts, positive and negative both. Data privacy and cyber laws. साइबर लॉज के बारे में ये मेरे क्लास वाले बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा। आई एम नॉट रियली श्योर बीबीए वाले बच्चों को थोड़ा अवेयरनेस है क्या इसके बारे में, बट आपका कंटेंट आपका है, नो कुकीज सेव्ड, बट ऐसा गूगल नहीं करता, ठीक है। और ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, इसको हटाने के लिए जब गवर्नमेंट ने बोला व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप गुस्सा हो गया, हम नहीं हटाएंगे। क्या ये साइबर लॉ मेरी प्रिवेसी के अगेंस्ट जा रहे थे? क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन मेरे मैसेजेस को प्राइवेट रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंक्रिप्शन हट जाता है, जो गवर्नमेंट चाहती थी हट जाए, वो मेरी प्राइवेसी को वायलेट कर रहा था। तो ये साइबर लॉज कहीं हमको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बने हैं, तो कहीं हमारी प्राइवेसी को वायलेट भी किया जा सकता है इन साइबर लॉज। Both the aspects are important. Then comes the multinational companies do more harm than good. हम अपनी कंट्री में, give me a second, let me have some water and I'll continue. आ रहा है ना कुछ कुछ समझ में? Okay. So the multinational companies do more harm than good. While in our country we are promoting Make in India, we know that what is ours, what is produced within our country is going to be benefiting my country's economy better than any multinational company does. 1990 and 91, after globalization, liberalization, privatization, multinational companies entered our country. But have they started causing harm? Because the amount of money they earn and the amount of money they pay to our country isn't equal. They earn huge, they take it back to their own countries, and what is given as salaries to our people is less. So this could be a harmful aspect of the multinational companies. Plus, their exploiting of our resources is another form where they can actually cause us harm. Rather than aiding to our economy, they're causing us harm. So we can talk about multinational companies doing good as well as harm here. Cryptocurrencies, प्लीज ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लास्ट 3-4 मंथ से, स्पेसिफिकली बजट आने के बाद, जब हमने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का डिसाइड किया और क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाने का डिसाइड किया,
और क्रिप्टो करेंसी जैसे बूम पे आई लास्ट कुछ महीनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिप्टो करेंसी कैसे फंक्शन करती है, कौन सी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज है, क्या फंक्शनिंग का तरीका है उनका, आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए. प्लीज डू योर रिसर्च ऑन दैट. Please read about this. It's going to be important from the perspective of WAT, interview, and micro presentation as well. Read in detail about cryptocurrencies and our budget that came this year. Okay, there should be retirement age in politics. ये तो आप आई एम श्योर बहुत अच्छे से बोल सकते हो, बिकॉज अगर पॉलिटिशियंस रिटायर नहीं होते हैं तो ये न्यू कमर्स को मौका नहीं मिलता. लालू प्रसाद यादव आज तक रिटायर नहीं हुए पॉलिटिक्स से. ठीक है. So if these older ones don't retire, how would, which university? The Christ one. I'll talk about that under my clap channel. I'll not address that here. Okay. In fact, not on the YouTube channel. I'll talk about that in my class. Do you come to my 5 p.m. class today? If you do, I'll tell you about that. Okay. So does cryptocurrencies, politicians, sexual harassment at workplace, very important क्योंकि there are laws जो sexual harassment को रोकते हैं, but then there still are cases where people get into sexual harassment for any undue advantage they get. Then LIC's disinvestment, ये पिछले 2 महीने से बहुत न्यूज में था. प्लीज रीड अबाउट दैट. प्लास्टिक बैग शुड बी नेशनली बैन्ड. यस. तो हमने 2 दिन पहले हिंदू एडिटोरियल क्लास में एक आर्टिकल किया था प्लास्टिक बैग्स और उनके बैन पे. अगर आपने नहीं देखी मेरी वीडियो, प्लीज जाके देखना. मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया प्लास्टिक बैग्स और उनके इम्पैक्ट पे, जो मरीन लाइफ पे इम्पैक्ट था. रिमेंबर दैट प्रीति, आपको याद होगा. हाउ हैज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जर्नलिज्म, हाउ टू डिक्रीज द क्राइम रेट इन आवर कंट्री. दोनों जेनरिक टॉपिक्स हैं, आप बहुत सारा डेटा इनमें बोल सकते हैं. It's a very generic topic. You could talk about both of that. So these are the topics which I think. एक और स्लाइड लेके आई हूँ, जल्दी से देख लेते हैं without talking about them in detail. Do people really follow the स्वच्छ भारत अभियान? क्योंकि गंदगी तो अभी भी बहुत है ना? तो शायद नहीं फॉलो करते हैं. Ease of doing business in India, that is Make in India, promoting that. But इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, क्योंकि कभी-कभी ये लोगों का मानना है कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया है, ये सिर्फ पेपर्स में है. लेकिन अगर आप रियलिटी में जाते हैं, अगर एक बिजनेस अपना स्टार्ट करने के लिए, आपको बहुत सारी हार्डशिप सफर करनी पड़ती है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया कितना इजी है और कितना डिफिकल्ट है, यू कैन टॉक अबाउट बोथ द एस्पेक्ट्स. टेक्नोलॉजी विल बी अ मैन्स डाउनफॉल. टेक्नोलॉजी विल बी अ मैन्स डाउनफॉल को आप मेंटल इम्पैक्ट, हेल्थ इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सबके थ्रू डिस्कस कर सकते हो कि ये कैसे हमें एड तो कर रही है, बट लॉन्ग टर्म में ये हमारा डाउनफॉल लेके आएगी, ये हमें सुपरसीड कर सकती है. जीएसटी, वन टैक्स. जब हम पेट्रोल के इंक्रीमेंट ऑफ प्राइसेस की बात कर रहे थे तो जीएसटी बहुत न्यूज में आया था, क्योंकि पेट्रोल पे, डीजल पे एक सेंट्रल टैक्स लगता है और फिर स्टेट टैक्सेस लगते हैं. तो इतने मल्टीपल टैक्सेस जो हमारी पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट है वो इतनी मैसिवली बढ़ा देते हैं कि जीएसटी का नीड आ जाता है वहां. तो जीएसटी बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन द पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत न्यूज में आया था. वन टैक्स थ्रू आउट द कंट्री, यूनिफॉर्म टैक्स जरूरी था. बहुत सी चीजों में आ गया है, कुछ चीजों में मिसिंग है. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, इस पे डिस्कशन हो सकता है. मनी मैनेजमेंट क्लासेस इन स्कूल शुड बी मैंडेटरी. ओह, आई एम अ प्रमोटर ऑफ दिस. आई एम श्योर आप जब जॉब करोगे तो आप भी रियलाइज करोगे हमें पैसे मैनेज करना क्यों नहीं आता है, क्योंकि पैसे तो हम अर्न करेंगे जब हम जॉब करेंगे. तो हमें जॉब में एमबीए कैसे काम करेगा ये तो सिखा दिया, एमबीए को बोलना क्या है, कैसे काम करवाना लोगों से, ये तो सिखा दिया. बट और स्कूल्स में इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, ज्योग्राफी कैसे है चलती है, और फिजिक्स कैसे काम करती है, ये सब सिखा दिया. बट और ये सब हमें मनी अर्न करने में हेल्प करेगा. बट डूड, इस मनी को मैनेज कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्या मेरा टैक्सेशन है, अपनी आईटीआर कैसे फाइल करनी है, ये सब तो मुझे किसी ने नहीं सिखाया. मुझे उसके लिए सीए हायर करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है? Schools need to teach that. How to make the LGBTQ more inclusive. हमारे कंट्री में कुछ टाइम के लिए इनको, इनकी राइट्स को वायलेट कर दिया गया था, रिवोक कर दिया गया था. बट अब हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां एलजीबीटीक्यू की कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटी है, और जब हमारा लॉ उनको रिकॉग्नाइज करता है तो हम कैसे अपनी सोसाइटी ऐसा बना सकते हैं जहां हम उनकी तरफ इंक्लूसिव हैं.
Yes, Atmanirbhar Bharat was exactly I was talking about. Ease of doing business in India. So कैसे हम इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं? आपने अभी नोएडा में एक डीपीएस में एक सुसाइड की न्यूज पढ़ी थी एक बच्चे की. रिमेम्बर दैट? याद है सबको? ये और भी न्यूज में इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बच्चा अपनी सेक्सुअलिटी को लेके ओपन था एंड ही वाज अब्यूज्ड sexually, mentally, because we don't live in an inclusive society. So, do we need to be more inclusive about the LGBTQ community? Yes, certainly yes. एक बात याद रखना, आप कुछ भी बिलीव करो, प्लीज इसके अगेंस्ट मत बोलना, बिकॉज आपको वहां जो एग्जामिनर है वो एक सेकंड में स्ट्रेटन अप कर देगा. आप जो भी बिलीव करते हो आपका बिलीफ, आई डोंट केयर अबाउट दैट, द एग्जामिनर डज नॉट केयर अबाउट दैट. प्लीज ओनली एंड ओनली टॉक अबाउट इन फेवर ऑफ इट, बिकॉज ये लॉ फेवर करता है उनको, तो आपके और मेरे पास कोई राइट नहीं है इसके अगेंस्ट बोलने का. रिमेम्बर दैट, ठीक है? प्रीति ऐप में जो पेड क्लास है उसमें, ठीक है? ऑलराइट. सो स्मोकिंग शुड बी बैंड इन ऑल द पब्लिक प्लेसेस, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ इट्स पैसिव इम्पैक्ट्स. बहुत सारी बात कर सकते हो. पीयर प्रेशर अ गुड थिंग, दोनों चीजें हो सकती है. पीयर प्रेशर एक्चुअली गुड भी हो सकता है और बैड तो आपको पता ही है. वीडियो गेम्स, इसका मार्क्स मेरे से ज्यादा है, मुझे और मेहनत करनी, मुझे इसको बीट करना है, ये गुड थिंग भी हो सकती है बट ये बैड भी हो सकती है. वीडियो गेम शुड बी कंसिडर्ड अ स्पोर्ट. इस पे भी एक एडिटोरियल आर्टिकल हमने 2 वीक्स पहले डिस्कस किया था इन डिटेल. इस पे जरूर आ सकता है. द पोल ऑफ द थिएटर्स, मूवीज आ रही है, थिएटर्स कोई नहीं देखता है. देखा है थिएटर? पार्टिसिपेट किया कभी थिएटर में? आप अगर आई एम चाहो तो आप पार्टिसिपेट करोगे, आई एम श्योर. बहुत सारे थिएटर एक्टिविटीज. So yes, the poll of theaters and pursuit of personal passion. मेरा पैशन क्या है, क्या मैं उसको फॉलो कर सकती हूँ? That is so. ये जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो लास्ट स्लाइड का, because I'll not talk in detail about the last slide. Otherwise, we'll go on and on. स्क्रीनशॉट ले लिया? Now let's come to the next slide. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Read about them in detail. Done? Now, the final tips. Remember, since it's my last class of the CUET micro-presentation preparation, few things you need to know. One, about your outfit, about your dress up. Polka dots, green, parity green, red shirt will look good when you go to Goa. Will not look good when you go here. Wear a formal outfit, shirt, trousers, formal outfit, clean, ironed. You can wear a tie if you want, but no bright colors, no funky colored shirts, no. Black set of pants, white shirt, grey pants, white shirt would look good. Any other combination with subtle colors. Carry a water bottle. Put your phone on silent, do not disturb mode. Silent means no vibration. Put your phone on silent, let it not disturb you at all. Carry your water, drink it. Be calm, be composed, be confident, be at the moment. Forget about everything else and show that you are the most confident. Remember, I had read a quote yesterday, and the quote was that 90% of the life, remember this, 90% of our life is confidence. And the good part about confidence is that nobody knows if your confidence is genuine or is it fake. You need to fake confidence, fake it. Because nobody knows if this confidence that's coming across is genuine or fake. And 90% of your life will be dependent on your confidence. Fake karna hai, fake karo. But remember, you need to show yourself as a confident. All the best for your macro presentation. I shall see you on Monday with another series on interviews, Monday, Tuesday, Wednesday, 12:30 p.m. Make sure you don't miss out on these series and make sure you share this session with all the people. So Sachin says, मैम इंटरव्यू इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, जो नहीं बोल पाता उसका क्या? सचिन, मंडे को एड्रेस करूंगी, डिटेल में बताऊंगी कैसे इंटरव्यू करना. मास्टर इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगी ना कैसे एड्रेस करना है. जरूरी नहीं है आप
सारी चीजें इंग्लिश में बोलते हैं। प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है, बट नहीं आता, हैंडल कर सकते हैं। आपने मुझे देखा है कभी भी कंप्लीटली इंग्लिश में बात करते हुए? नहीं। आपने मेरा कॉन्फिडेंस कम होते देखा कभी भी? तो हम हैंडल कर लेंगे दोनों। I shall see you on Monday on at 12:30 everybody. Have a very good day and God bless.